Cell structure and functions. So we have talked about the cell, how cell are made up. Let's talk about its functions, how they perform the functions. So cell structure and functions, each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation, absorption, respiration. So these are the different functions performed by the different organs. So similarly in plants, different organ perform different function, like root absorbs water and mineral from the soil, and also organ is composed of a number of tissues which have different cells, same type of a cell performing the same function. So organ is made of tissues which have similar cells performing same function. तो जैसे हार्ट सेल है, तो हार्ट सेल में कई सारे सेल है, वो उनका काम एक ही काम है, पेसिंग का काम, या फिर कुछ सेल हार्ट के अंदर होते हैं, इनका काम है कंप्रेशन का, प्रेशर जनरेशन का. So like you can see, these are different type of tissues and they perform different function. Like heart में एक पेसिंग का काम कर रहा है, एक कंप्रेशन का काम कर रहा है, और उसके अंदर different आपके then blood vessels are there. So these all tissues performing different functionality, they all mix together and then they make a organ. So organ is made of tissue which has similar cells or performing the same or specific function. So parts of a cell. So there are mainly three parts in a cell. These three parts are membrane, cytoplasm and nucleus. And the cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. तो cytoplasm और nucleus आपस में अंदर एक cell membrane के अंदर होते हैं. And this membrane separates cell from each other. एक दूसरे सेल से सेपरेट करने के लिए membrane होती है. The membrane separates cell from each other and also from surrounding. तो बाहर से भी सेपरेट करने के लिए जो है यही सेल मेम्ब्रेन ये दोनों काम करती है. एक दूसरे सेल से भी एक दूसरे से सेपरेट करती है और बाहर सराउंडिंग जो है फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम जितने भी हैं उनसे भी सेपरेट करने के लिए ये काम में आती है. एंड इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन एडिशनल लेयर इन द प्लांट सेल which is called the cell wall. So in addition to cell membrane, plant cell has additional membrane called cell wall. तो ये एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है एंड this is required by the plant mainly for protection, extra protection from the surrounding. So this layer is specially required by plant to protect from surrounding.
तो सराउंडिंग में क्या क्या प्रोडक्शन है, जैसे आपकी योर इन्वायरमेंट इज द मेजर थिंग बिकॉज वी मूव टू दी वी मूव एंड एज पर द इन्वायरमेंट चेंजेस हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, बाहर है गर्मी लग रही है अंदर आ जाएंगे ताकि हमें ज्यादा गर्मी ना लगे, बट पेड़ तो वहीं का वहीं है या प्लांट वहीं का वहीं है, तो उसको जो एनवायरमेंट एक्स्ट्रा जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हैं, बहुत तेज हवा चल रही है, इन सब चीजों से प्रोडक्शन के लिए उसको इट नीड्स एन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड द सेल वॉल. So you must have read in your textbook that in an egg the white material surrounding the yellow part that is so this is the white material which surround the yellow part, and white material is albumin. White material is albumin which solidifies आफ्टर बॉइलिंग. तो बॉयल करने पर ये सॉलिड हो जाता है. एंड द योक इज ऑल्सो द येलो पार्ट, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सिंगल सेल. दिस होल इज द सिंगल सेल. योक इज येलो पार्ट, दिस होल इज अ सिंगल सेल. ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल है. एंड वी हैव आल्सो रेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, इन दोनों की मूवमेंट कोई भी मटेरियल है उसको अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो एक तरीके से छन्नी की तरह होता है जिसमें से अंदर बाहर दोनों चीजें जा सकती हैं. एंड वी हैव आल्सो रेड प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई वेट, स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा. सो दे आर दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर एक्सपोज टू दिस. दिस इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट since they are exposed to this and cannot, और वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट इट. दे हैव द सेल वॉल. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट द सेल एंड इट्स functions in the next chapter.